हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका लिटरेचर की सीरीज में जिसमें हम पढ़ा रहे हैं हिस्ट्री ऑफ लिटरेचर। हम हैं एज ऑफ मिल्टन पे। आज हम पढ़ेंगे इसके प्रोज के और एसेज के बारे में कि इस एज में प्रोज जो था उसमें कितना काम हुआ, काम करने वाले, उसको आगे बढ़ाने वाले कौन कौन इंपॉर्टेंट राइटर्स हमारे नेट के लिए, वो सब पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट हम पढ़ेंगे प्रोज के बारे में। The development of prose was copious and excellent in kind. There were notable advances in this sermon. Pamphlets were abundant, and history, politics, philosophy, and various miscellaneous kinds were very well represented. In addition, there was a remarkable advance in prose style. अब religious prose के बारे में देखते हैं हम। इसमें हमारे पास सबसे पहला और अहम नाम आता है जेरेमी टेलर का। इनका जन्म हुआ था 1613 में और 1667 में इनकी मृत्यु हो गई थी। He was the most prominent literary divine of the period. He is remembered for his collection of sermons. इनके जो important works हैं वो हैं The Liberty of Professing जो कि 1647 में पब्लिश हुआ था, Holy Living 1650 में एंड होली डाइंग जो कि इसके एक साल बाद यानी 1651 में आया। जेरेमी टेलर डिजर्व्स मेंशन एज फाइन स्पेसिमेंस ऑफ रिलीजियस प्रोज। इन हिज राइटिंग्स वी फाउंड quotations and allusions and of florid rhetorical figures such as simile, exclamations and apostrophe. His language built into long, stately and comprehensible sentences in abundant, melodious and pleasing. अब नेक्स्ट आता है हमारे पास थॉमस फुलर। इनका जन्म हुआ था 1608 में और 1661 में इनकी मृत्यु हो गई थी। ही रोट सीरियस हिस्टोरिकल बुक्स जैसे द हिस्ट्री ऑफ द होली वॉर 1639 में पब्लिश हुई थी, जो कि एंड द चर्च हिस्ट्री ऑफ ब्रिटेन जो कि 1655 में आई थी। हिज पैम्पलेट्स इंक्लूडेड गुड थॉट्स एंड बैड टाइम्स जो कि 1645 में आई थी और एन अलार्म टू द Counties of England and Wales जो कि 1616 पब्लिश हुई थी। His works reveal his original and penetrating mind, wit and humor. इनका जो स्टाइल है वो काफी accurate and sententious था। His dry humor appealed strongly to Coleridge and Elia। तो ये हमने पढ़ा प्रोज के बारे में इस एज के। अब हम पढ़ेंगे एसेज के बारे में। While in the early part of the 17th century, the delineation of character was the most popular exercise of essays. It was not the only one. The essays which Bacon had introduced could be put to many uses. The essayists of the 17th century brilliantly attempted the easy form, though they did not tread Bacon's footsteps. अब essayists में जो हमारे पास पहला नाम आता है वो है ओवन फ्लेथम का। इनका जन्म हुआ था 1602 में और 1668 में ये गुजर गए थे। He was the author of Resolves, Divine, Moral, Political, which is a graphical picture of contemporary society. In the preface to the reader, the author is careful to explain that these essays were written not so much to please others as to profit and gratify himself. The resolves are written not without ease but certainly with केयर। इनकी जो स्टाइल है उसमें हमें काफी ऑर्नेट फ्रेजेस देखने को मिलते हैं। फ्लेथम हैड प्लेंटी ऑफ विट दो अपेरेंटली नॉट मच ह्यूमर। इनके सब्जेक्ट्स जो हैं वो काफी पॉलिटिकल, एथिकल और काफी जनरल इंटरेस्ट के होते थे। फ्लेथम वाज मोर डिस्टिंक्टली रिलीजियस और मोर विद अ रिलीजियस टिंग। द नेक्स्ट इज विलियम ड्रमोंड। इनका जन्म हुआ था 1585 में और 1649 तक ये जिए थे। इनका एक बड़ा फेमस वर्क था अ काइप्रेस ग्रोव, which is remarkable for refinement, elegance and reflective note. There was in Drummond form the start a strain of mysticism. He is akin to the English Platonist and is enamored of the Platonic doctrine of ideas. He believes in the oneness of the universe and the oneness of the soul with that from which it comes. A Cyrus Grave is perhaps the first conscious and sustained effort in English to write political prose. Drummond was a born essayist. Had he lived a century later, he would almost certainly have shone in the company of Steele and Addison. तो इससे हमें इनकी ग्रेटनेस का अंदाजा लग सकता है। आगे बढ़ते हैं हम। अब आते हैं हम अब्राहम काउली पे।
जो 1618 से 1667 तक जिए थे। Cowley cultivated a form of essay more intimate and confidential, though less profound, witty and philosophical than the Baconians. As a prose writer, his output is slender. It consists of a mere handful of discourses and prefaces. Abraham's essays are noticeable for intimacy and simple and sincere self-revelation. They are of the friendly chat of a thoughtful and reflective spectator of life. His essay of myself is the finest of his compositions. Now moving forward, James Howell, जो कि 1594 से 1666 तक जिए। इनका एपिस्टोले हो इज अ कलेक्शन ऑफ फेमिलियर लेटर्स, डोमेस्टिक एंड फॉरेन, कुछ हिस्टोरिकल, पॉलिटिकल और फिलोसफिकल भी। इनकी जो स्टाइल है इज सिंपल, फेमिलियर एंड इजी, rapid and clear in narrative, humorous or pathetic according to the occasion. In many ways, he is the forerunner of Queen Anne essays. He addresses himself to the understanding and rarely fails to make himself intelligible. Howell anticipated the periodical essays and he has been spoken as a journalist before the time of journalist. तो ये दोस्तों हमने अब तक देखा कि essays को आगे बढ़ाने वाले कौन कौन से हमारे important writers हैं नेट के रिगार्डिंग, उनके हमने इंपॉर्टेंट वर्क्स भी देखे। अब आगे बढ़ने से पहले एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने उन दोस्तों के साथ भी शेयर करें जो नेट की तैयारी कर रहे हैं, उनको रिवीजन हो जाएगा, काफी हेल्प मिलेगी। आगे हम पढ़ेंगे अब सर थॉमस ब्राउन के ऊपर। इनको हम थ्रू आउट स्टडी करेंगे। इनका जन्म हुआ था 1605 में और 1682 में ये एक्सपायर हो गए थे। ही वॉज बोर्न इन लंडन एंड वॉज एजुकेटेड एट विंचेस्टर एंड ऑक्सफोर्ड। इन्होंने मेडिसिन की स्टडी की थी। फॉर सम टाइम इन्होंने प्रैक्टिस भी की थी। कहाँ पे? ऑक्सफोर्डशायर में। ही वॉज ए वाइडली ट्रेवल्ड मैन एंड ही रिसीव्ड द डिग्री ऑफ MD एट लेडेन यूनिवर्सिटी। रिटर्निंग टू इंग्लैंड इन 1634, he was soon removed to Norwich in 1637, where for the remainder of his life he successfully practiced as a doctor. Thomas Browne's prose works were although small in size but have a great literary interest. His Religio Medici, जो कि 1635 में आया था, is confession of faith and a curious mixture of religious faith and scientific skepticism. Religio Medici is an excellent prose companion to the metaphysical works of the age. Browne's mirrored in little most of the characteristics of the time without developing any to excess, but it is as a stylist of modulated, harmonious English prose that we most esteem him. इनके कुछ और भी वर्क थे, जैसे वल्गर एरर्स, जो कि 1646 में आया था, in which he shares the same mental inconsistency. He resembles the work of Burton in its out of the way line. इनका एक और बड़ा important वर्क था जो कि था Unburial, जो कि 1658 में आया था. It contains Browne's reflection on human mortality induced by the discovery of some ancient funeral urns. अब हम थॉमस ब्राउन के कैरेक्टरिस्टिक्स देखते हैं एज ए राइटर। फर्स्ट हम इनके एसेज को स्टडी करने से जो हमें पता चला है, फर्स्टली इनके एसेज पढ़ने से जो हमें पता चला है हम वो देखते हैं। सर थॉमस ब्राउन डिजर्व्स अ प्लेस अमंग द एसेइस्ट्स ऑफ द 17th century. It is generally assumed that his prose writings have more of the nature of treatise than of essays. They are much longer than the essays. Hugh Walker thinks that there is a little unity in his writings. Each chapter is an independent entity, he says. The truth is that each chapter in an essay in itself virtually independent of the others with which it is grouped. He is essentially and always desultory, though this does not mean a careless writer, and his meditations are invariably dispersed. Sir Thomas Browne's writings are for the most part collections of independent papers which the author has spoken to head as chapters. He is in soul and substance as an essayist from start to finish. अब हम इनके intimate characteristics देखते हैं. He is personal and very intimate. In Religio Medici, he has none of the detached, impersonal, scientific spirit of a treatise. At its very beginning, the personal note is struck, the note which is
characteristic of the essayist of the school of Montaigne. For example, I confess, naturally inclined to that which misguided zeal terms superstition. Browne takes his readers into his confidence in the same artless and undisguised manner as the immortal Montaigne. Next, इनके स्टाइल के बारे में समझेंगे अब हम. As a stylist, Browne deserves so much of praise. His style is pedantic, ornate and strongly Latinized. यानी कि जो इनका स्टाइल था वो बहुत रूढ़िवादी था, यानी ऑर्थोडॉक्स था. ऑर्नेट मतलब सजावटी था, और लेटिनाइज्ड मतलब काफी लेटिन जो लैंग्वेज थी उसको यूज करते थे अपने वर्क्स में. ये समटाइम्स टू द लिमिट ऑफ ऑब्सक्योरिटी. He has the scholastic habit of introducing Latin tags and references, जो मैंने अभी आपको समझाया. It was Sir Thomas Browne who, though a writer of great genius, first effectively injured the literary taste of the nation by the introduction of learned words. His style is a model for musical prose. He was interested in the beauty of words, in their sound, their form and the image that they raised. ह्यूज वॉकर ने इनके लिए कहा है, The value of Browne as a model for musical prose is perennial. Few would be capable of directly following him, but many have even unconsciously written more melodious English because he had written before them. His sentences are carefully wrote and artistically combined into paragraphs. And most importantly, from the literary point of view, the diction has a richness of effect unknown among other English prose writers. The rhythm is harmonious and finishes with carefully attended cadences. The prose is sometimes obscure, rarely vivacious, and hardly ever diverting, but the solemnity and beauty of it have given it an enduring fascination. So that's it for the day, guys. ये वीडियो यहीं खत्म होती है. जो आने वाली वीडियो होगी उसमें हम नेक्स्ट एज जो भी है रेस्टोरेशन पीरियड, या जिसे एज ऑफ ड्रैगन भी कहा जाता है, उसको हम कंप्लीटली कवर करेंगे. यानी कि ड्रामा, प्रोज, पोएट्री, कॉमेडी जो कुछ भी था सब कुछ पढ़ेंगे. जो इम्पोर्टेंट राइटर्स थे उनको समझेंगे, उनके बारे में भी पढ़ेंगे, और जो मोस्ट इम्पोर्टेंट वर्क्स हैं नेट के रिगार्डिंग जिसमें से क्वेश्चंस बनते हैं वो भी कवर करेंगे. सो जरूर देखना उस वीडियो को भी, और चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें. थैंक यू गाइज.